Good afternoon, everyone. So, I welcome you all to our today's session where we will settle once and for all कि भाई कौन ज़्यादा ग्रेटर है न्यूटन और कुलोम. These are some of the memes that you people share with me. Here it is another one. So, this is Sir Isaac Newton, 1642 to 1727. And after his death, Charles Augustine de Coulomb has born after almost one decade, 1737. And still, these are the two greatest minds in last century who have revolutionized our physics and basically electronics. So obviously ये first equation तो आप सबको पता ही है, F is equal to G m1 m2 upon r square, where G is constant of proportionality. क्या है होता है उसका वैल्यू? It is universal gravitational constant. On the same line, you have force between two charged particles as k into q1 q2 upon r square. तो आगे जाके हम देखेंगे कि k क्या होता है, what is constant of proportionality for this particular type of forces between two charges. So uh, what about copyright? Same ही equation है ना? Yes, sir, same. Yes, sir. Just reference, you can say reference है उनकी gravity F is equals to G m1 m2 r square का एक reference है वो F is equals to K q1 q2 r square in terms of chemistry or that molecular. Yes. So basically here our Charles Augustine de Coulomb, बाबा कुलोम कह रहे हैं कि सर आपका कॉपीराइट ठीक है लेकिन ये तो नेचर है, मैं क्या करूं, मैंने आपका कॉपी नहीं किया है, दिस इज नेचर. ये किसने भेजा था? Yes, sir. हाँ, सर जिसने भी बहुत भेजा था बिल्कुल परफेक्ट भेजा है. ये बहुत बहुत बढ़िया था, ये बहुत 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 बढ़िया था. Yes, sir. ये मैं समझ गया था. हाँ. And these are you people after studying gravitation chapter in 11th class. हाँ? चल हट, मैं नहीं रहता तेरे से. Class only. दिस इज गुड. तो आई होप आप सबका यही मेंटेलिटी होगा, so that you will not fear our Coulomb's law, because you have already dealt with laws of gravitation. सही है ना? तो या as you can see here, why study electromagnetics, ये जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन है ये नेक्स्ट, where we will be discussing some of the applications of Coulomb's law, because I felt that it is important for you people to understand the application part before we delve down into mathematics. So ये दो बहुत बूढ़े लोग, एक बाबा कुलोम है दूसरे बाबा न्यूटन है, दोनों लड़ रहे हैं भाई मेरा फोर्स सबसे बढ़िया है, मेरा फोर्स, माय फोर्स इज ग्रेटर वन, मे द फोर्स बी विथ यू. देखते हैं किसका फोर्स ग्रेटर है. ओके, शैल वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the Coulomb's law as mentioned in your textbook. Okay, ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग. This is Coulomb helping chemistry. Yeah, this is the greatest battle. So if you have calculators with you, please check out these calculations which I have put on your PPT जो आपकी स्क्रीन पे है. Just check out these calculations whether they are right or wrong. So on the left hand column you have gravitational force, sorry, on left hand column you have electrostatic force, and on right hand column you have gravitational force. So electric force exists due to charges, while gravitational force exists due to presence of mass. And yeah, gravitational force will always be force of attraction. You will never have a force of repulsion, because there is no physical evidence of anti mass. Okay, मैगजीन्स में या कॉमिक्स में आपको मिलेगा, बट फिजिकली प्रेजेंस अभी तक तो प्रूव नहीं हो पाया है एंटी मास का. एंड हाउएवर आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, इट कैन बी आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन.
Now these are just values for charge and mass of electrons and protons. Okay, so charge on one electron is minus 1.606 into 10 raised to minus 19 coulomb. Similarly on proton, same charge, the only difference is instead of negative charge it will be positive charge. So there is one electron and one proton जिसका हम force calculate करेंगे, and on right hand side you have mass of electron and mass of proton. So mass of electron is 9.11 into 10 raised to minus 31 kg, and just do the math. सर आर की वैल्यू नहीं दी हुई है कौन सी वैल्यू नहीं है? आर की सर वैल्यू? आर की ओके ओके, Yes. आर की वैल्यू इसमें नहीं है। अभी वो आप कैलकुलेट कर लो, चलो ढूंढना पड़ेगा। हाँ या मैं तो भूल ही गया, ये आप ही के लिए रखा था, सब कुछ मैं ही करूँगा क्या? तो फाइंड ठीक है सर out what is the molecular distance for your Okay, sir. electron and proton in a hydrogen atom. ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन हमने हाइड्रोजन के लिए किया है, where you have only one electron and one proton. So it is found that obviously, as you can see here, which force win? Electrostatic force or gravitational force? कौन सा ज्यादा बड़ा है? So electrostatic. Yeah, electrostatic force is bigger. So I guess it is settled now. Electrostatic force is bigger. So Baba Coulomb must be very happy. Excuse me, sir. Yes. Sir, what do you mean by anti-mass? What do we mean by Anti-mass. anti-mass? Okay. Sorry. Yes. Just like when we have positive charge and negative charge, two opposite charges are there, na? So we have positive charge and negative charge. That's why we have force of attraction Yes, sir. and force of repulsion. ऐसे दो हमारे पास forces है. While for gravitation, वैसे दो forces होने के लिए we need two different kind of things. जैसे अगर यहाँ पे charge है और gravitation के लिए mass है, and we have positive and negative charge, so we need positive mass and negative mass. So generally ऐसे नहीं बोला जाता positive mass and negative Sir. mass. The term physicists use is anti-mass. Okay, sir. Sir, like when we have two similar charges, like positive charges, we have the force of repulsion. Yes. And we see that between Earth and between the Moon. moon, we have a force of attraction. Yes. So, can we consider them like they have different charges? No, Like they do the- not have different They have charges. because of the masses, because of the difference in mass. Yeah, all the universal bodies in entire universe are neutral in nature. Yes, sir. There is not a single body in universe which is either positively or negatively Yes. charged. They all are neutral in nature. That's why this universe exists. अगर Yes. ये neutral नहीं होते, then this universe would have collapsed. Because just now I told you about mass and anti-mass. So these अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अगर कंबाइन हो जाते हैं, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर. Similarly, mass and anti-mass when combined, there will be a singularity. Yes, sir. Okay, physical terms है. If you are more interested, हम इसके ऊपर एक सेशन रखेंगे सैटरडे पे. Okay, sir. So I guess it is settled now that force of electrostatic force given by Baba Coulomb wins by a very large majority. सही है? Yes, sir. बेचारा न्यूटन. Yes, sir. नहीं, but the thing is, even though this electrostatic forces are very strong at atomic level, when we are dealing with forces of nature at universal level, Newton's law win. Newton's law win by a very high majority, because obviously
R तो दोनों में सेम ही रहेगा, as you can see here. What will vary is value of your numerator Q1, Q2 and M1, M2. And at universal level, as I told you, you do not have charged bodies. But all the universal bodies have very high mass. जैसे Earth है, Moon है, Saturn है, Sun है, all the galaxies, they have very high mass. So because of the very, very high mass, obviously they will win at universal level. So at universal level, Baba Newton को प्रणाम. And when we go into atomic level, बाबा कुलोम को प्रणाम. ठीक है. And ये आपने थोड़ा सा देख लिया था कि how this Coulomb's law is used in chemistry and physics. ये दो slides मैंने बनाए थे Coulomb's law का आपको बताने के लिए. Now where is Shubhankar? Shubhankar? Yes, sir. Yeah. I had asked you yesterday to help me with something. आपने कुछ लिखा है? सर लिखा तो नहीं सर, लेकिन मैं पेज ओपन करके रखा हूँ एक मिनट. Yeah. Yes, Shubhankar. So we all have been playing with marbles in our childhood days. मैंने पूछा था कि भाई किसने किसने marbles के साथ play किया है. Only few people replied. Shubhankar was one of them. So Shubhankar, Yes. can you share your screen? अच्छा आपने laws open करके रखे क्या? I'll open marbles. YouTube ओपन होता है यहाँ पे. कोई वीडियो होगा. Yes, sir. रुको, YouTube पे वीडियोस देखते हैं. Okay. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Something to mark a circle with, like chalk on the sidewalk, chicken dirt, or a string on a carpet. 13 standard size marbles. One shooter marble per player. Step 1. On your playing surface, draw or mark a circle with anywhere from 3 feet to 10 feet across. The bigger your circle, the harder the game will be. If you're playing inside, use a piece of string about 9.5 feet long to make a circle 3 feet across. Step 2. Draw or mark a line that just touches the middle of the line. Draw another line that mirrors the first line on the other side of the circle. Step 3. Decide who's going first. Each player should stand behind one of the lines and toss one marble towards the other one. This is called dragging. The person whose marble lands closest to the second line goes first. The next player goes next. Step 4. In the very center of the circle, set up the marbles to the shape of the cluster. The marbles, which are also called pins, can also be set up in a circle or scattered randomly. Step 5. The first player kneels down anywhere outside of the circle holding his shooter in one hand,
Now, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Why shooter is chose to be bigger? As you can see clearly, the shooter is usually one of your favorite and slightly bigger marble. Uh, can anybody tell me why shooter is chose to be bigger? Science. सर सर Like ज्यादा because मास एम रहेगा लग तो ज्यादा सके सर। फोर्स, sir एम because अच्छा लगने के लिए. Okay. हाँ sir, उसको मूव कराने के लिए। Yes, since it Larger. yes, since it is larger, it is bigger, it will have more mass. सही है ना? So here comes your Newton and Newton's laws of motion. So whenever we were playing marbles, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि भाई बाबा न्यूटन ने इसके लिए कोई लॉज बनाए होंगे और वो हम यूज कर रहे हैं. Unknowingly we were using them. अब मैं आपको उसका एप्लीकेशन बताता हूँ, क्योंकि ये हमेशा का रोना होता है लोगों का कि सर हम तो पढ़े जा रहे हैं, एप्लीकेशन किधर है? रियल लाइफ में इसका कहीं पे कुछ भी यूज नहीं होता. वॉट एवर यू आर टीचिंग अस इन एकेडमिक्स, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये एकेडमिक्स में आने से पहले आप रियल लाइफ में यूज कर चुके हो. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है शुभंकर? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. Yes, sir. Sir, हाँ. an object is to be in the state of rest or in a motion unless it is acted by an external force. तो कंचे खेलते थे, अगर कंचे खेलते थे तो याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा, all these marbles which are placed either in plus shape or circle shape, जो कुछ भी उन्होंने रखे हैं, okay, they will be in that state unless and until acted upon by external force, जो आप शूटर के थ्रू उसको अप्लाई करते हो. सही है ना? Unless and until your shooter touches that particular marble or any other marble comes and touch that particular marble, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं. It is simple physics. What is second law? Hello? Okay, I guess मेरा audio चला गया. Hello? Shubhankar? Yes, sir. Audible, sir. हाँ, yes. What is the second law? Yes, sir. It is the rate of change of velocity with respect to time is equal to force applied on the object. Yeah. अब इसका exactly opposite चीज आप करते थे. For example, let me play it. First shooter, marble outside of the circle, he picks up the marble and for one. He can now shoot again in the spot where the shooter landed. You can play this game for fun or for keeps. It means at the end of the game, everyone gets to keep the marbles they knock out. Decide before you start which way you want to play. Step 8. The first shooter's turn continues until he doesn't knock out a marble. Then he has to leave his shooter where it is, and it's the next one. You're more likely to hit your marble target, look at it, and not forget to set it down and click your thumb. Step 9. The next player now knuckles down and shoots from anywhere outside the circle. If she knocks out a marble, she picks it up and keeps it. Step 10. A player can also Okay. sir ये तो गलत So, बोल रहे हो. हाँ, नहीं, ये उनका खेलने का तरीका है बेटा, छोटे बच्चे हैं. Now, where comes your second law? What if जो मेरा शूटर है वो शूटर मेरे स्मॉल साइज का है, नॉट एज बिग एज माय अपोनेंट शूटर. सो अगर मुझे ये राउंड सर्कल से बाहर निकालने हैं कंचे, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. एम आई राइट? यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स. Yes, sir. एंड हाउ यू विल अप्लाई मोर फोर्स? इसीलिए शायद किसी ने बोला कि सर ये गलत खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें तो ज्यादा फोर्स लगाने की गुंजाइश बहुत कम है. Yes, जिस sir. तरह से हम खेलते हैं, अगर हमारा क्लासेस शुरू होते तो मैं आपको क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता. Sir, वो How- middle finger से ज़्यादा force Yes, लगता है, sir. yes, yes. How good my aim is. मैं आपको क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता इसका. लेकिन चलो यहीं पे वीडियो देख के सीख लेते हैं. नाउ एज योर फ्रेंड टोल्ड कि सब मिडिल फिंगर से ज्यादा फोर्स लगता है. सो अगर आपका शूटर स्मॉल साइज का है एंड यू नीड टू
move a bigger marble, so what you are going to do is you are going to apply more force. And how you will apply more force? So ज़्यादा तेज गति से मारेंगे, ज़्यादा स्पीड से मारेंगे, तो obviously ज़्यादा force लगेगा and I'll be able to knock out that marble outside the circle, right? This is nothing but your Newton's second law. What do you mean by ज़्यादा force से मारेंगे? See, whenever it was on your middle finger, आपका जो shooter होता था, when it was on your middle finger, it was at the state of rest. सही है? And you apply more force on it by pulling your finger in backward direction. You apply more force on it and you leave it suddenly. So now initially it was at the state of rest. Now it has got some momentum. It have some high velocity, and in very small time it will cover a large distance. That is what you mean by very high velocity object. And that is your Newton's second law. Because if it have very high velocity, obviously it will have more force. And थर्ड लॉ तो सबको पता ही है, सबका फेवरेट होता है, फिर भी शुभंकर एक हमको हेल्प कर दो एक बार फिर से. What is third law? Yes, sir. In the third law, it states that for each and every action, there is an equal and opposite reaction, but it gets applied to two different objects. तो इन आवर केस अगर आप जो आपका जो शूटर है उसका साइज छोटा है और जो मार्बल है उसका साइज बड़ा है, या फिर जैसे हमारे यहाँ पे गांव में हम खेलते थे तो वी यूज टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्बल्स. कांच के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सबको. वी यूज टू हैव मार्बल्स मेड ऑफ स्टोन, सीमेंट, and even metallic ball bearings were used as marbles. Obviously जो मेटल का बॉल बेयरिंग यूज करता था उसका तो मार्बल हिलता ही नहीं था. उल्टा हमारे जो मार्बल्स हुआ करते थे कांच के या सीमेंट के, वो मार्बल से एक जगह से दूसरी जगह पे उसको टच करने के बाद घूम जाते थे. Why? Because for every action there is equal and opposite reaction, और क्योंकि उसका मास ज्यादा है, so the gravitational force on that ball bearing metallic marble will be more as compared to the gravitational force on my object. So ये टोटल समेशन करके ये आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में किया था. आप शायद सोच रहे होंगे कि सर हमने फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ा था. दिस इज योर अप्लाइड मैकेनिक्स, where you added different types of forces and you calculate the resultant, and based on resultant आपको पता होता है कि किस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा. तो ये सब हमने यूज किया था while we were playing कंचे, and Newton was helping us unknowingly. Out a marble, pick it up, and keep. Step 10. The चलो. player can also try to knock out another. Now coming back to our presentation. कहाँ पे है? Coulomb's law. Yes. Yeah. Sir, so what does it have to do with electromagnetics? What does it have to do with Coulomb's law? As we are experiencing in this session, कि we are mirroring Newton's laws and Coulomb's law with each other. So अगर Coulomb's law का Newton's law का ये application हमने देखा while playing marbles, is there any similar application for Coulomb's law? So that application is called as photoelectron spectroscopy. So is it visible? Slide सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Somebody please, somebody please Google it. Google this term photoelectron spectroscopy and read it aloud. जो भी पहले करता है रीड करो. Google it, photoelectron spectroscopy. पहला जो रिजल्ट आता है जनरली डेफिनेशन होता है, विकिपीडिया का पेज रहता है. जस्ट रीड इट आउट फॉर मी. तब तक बाकी लोग देख लो डायग्राम क्या क्या है. कोई कर रहा है? Yes, sir. हम्म. Sir, photoelectron spectroscopy is an experimental technique that measures the relative energies of electrons in atoms and molecules. Scientists often use photoelectron spectroscopy to study the elemental composition of materials or to characterize bonding in molecules.
So basically, photoelectron spectroscopy is used to identify what are different atoms or what are different materials present in particular substance. कोई भी अगर आपको नया सब्सटेंस मिलता है, सॉरी नॉट नया सब्सटेंस, कोई भी नया फिजिकल थिंग मिलता है आपको, देन यू वांट टू नो व्हाट इज इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज इट मेड ऑफ, molecular structure उसका क्या है. So photoelectron spectroscopy is used for that only. Now here also the same logic is used which we used while playing marbles. Now in playing marbles we know that if I want to remove this particular marble outside a circle, or more I want to move it with more distance. So what I have to do, either I have to use bigger marble as a shooter, or I have to apply more force. सही है ना? Same logic यहाँ पे भी हम use करते हैं. Now instead of marbles we are trying to remove electrons out of the orbit. Now as you can see here, there are three atoms: hydrogen, helium and lithium. So hydrogen is having one proton, one neutron. Helium is having two protons and two electrons, and lithium is having three protons and three electrons. So now tell me, out of these three, which electron will have more force, will require more force? Hydrogen, helium and lithium. You have three atoms and you need to remove electron out of the orbit of these three atoms. So whether it is difficult to remove electron from hydrogen or it is difficult to remove electron from lithium. सर लिथियम का होगा. सर हाइड्रोजन. सर हाइड्रोजन सर. सर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए. सिंगल ऑर्बिट में. Yeah. And what about lithium? Lithium have three charges, three proton, three neutron. So multiplication करोगे तो 9 हो जाएगा ना. बस abundance में है सर, उसका एक निकाल भी लेंगे, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सर बट atomic radius ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगा ना. Yes. See, our Coulomb's law does not depend only on your charges. Charges से तो directly proportional है, but it is inverse square law है. So it is inversely proportional to the square of distance. So obviously, if you look at the atoms, hydrogen and helium will have same value of R. R का value दोनों में क्या रहेगा? Same रहेगा. Am I right? Because you are dealing Yes. dealing with first orbit. While lithium, जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहोगे, आउटर ऑर्बिट का सबसे पहले रिमूव होगा एंड इट विल हैव मोर डिस्टेंस. दो चार्जेस जो है आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्जेस है इनका डिस्टेंस ज्यादा है. ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन. लेट अस से कि हाइड्रोजन का सारे एलिमेंट्स के जो प्रोटॉन्स है, दे आर कीपिंग योर इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के उसको इंटैक्ट रख रहे हैं. सो नाउ टू रिमूव हाइड्रोजन marble, you need to apply large amount of force as compared to which you apply for lithium. And it is evident here also, as you can see, this 1.31 is the force required. Unit अभी यहाँ पे नहीं दिया है. 1.31 is the force required to remove electron from hydrogen atom, while 2.37 is the force required to remove electron from helium atom. Now both of them have same radius, but since helium will have two charges, सही है ना, two protons and two electrons, so it will have more force. It will require more force to remove that particular electron from the hold of your nucleus. That's why
हाइड्रोजन के लिए 1.31 लगा, तो हीलियम के लिए उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, 2.31, 2.37. But for lithium, since distance is very large, the force required is very small, 0.52, which is smaller than even hydrogen atom because of inverse square law. So पहला इलेक्ट्रॉन तो आप आसानी से निकाल लोगे 0.52 इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगा के, but to remove the second electron, however, you will require force which is greater than helium. Why? Because helium में क्या थे, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, but now lithium will have 3 protons and 2 electrons with same orbit. R same रहेगा, but here you will have 3 protons and 2 electrons. So obviously the force required to remove that particular charge from the hold of nucleus will be more, which is 6.26. ये सिंपल उसका एक क्या बोलते हो फिजिकल सेटअप दिखाया उन्होंने. तो जो भी आपका सैंपल है, यू जस्ट अप्लाई अ फोटोन सोर्स. सो हमें ये पता है HV ये क्या है, व्हाट इज H? Hydrogen. Yeah, not hydrogen. This HV. So Planck's constant. Yes, thank you. किसने बताया? Thank There are other. others. Thank you. So HV, H is Planck's constant. So हमें पता है कि फोटोन जो होते हैं, they are in packets. They come in packets of energy. So that is why ये जो आपको forces मिलेंगे, ये आपको डिस्क्रीट मिलेंगे. दे विल नेवर बी कंटिन्यूअस. ऐसे कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होगा कभी भी, ये आपको डिस्क्रीट ग्राफ ही मिलेगा, बिकॉज दीज फोटॉन्स कम इन पैकेट्स. तो हमें पता है कि भाई मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, 1 यूनिट एनर्जी चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, 3 यूनिट चाहिए, तो मैं उतना अप्लाई करते जाता हूँ. इनिशियली व्हाट आई डू इज, मैं एक ही यूनिट का एनर्जी लगाता हूँ, एंड आई सेंस वेदर एनी इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मटेरियल और नॉट. अगर रिमूव हो, जिस एनर्जी पे वो रिमूव हो जाएगा, उतना नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने यहाँ पे खर्च किए. और इसका एक टेबल रहता है, इसका एक टेबल रहेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर यूजिंग, देन वो कौन सा मटेरियल है, ऐसा एक टेबल रहेगा, एंड यू विल डायरेक्टली नो कि योर सैंपल इज मेड अप ऑफ व्हाट मटेरियल. इजी है ना, इंटरेस्टिंग था. Yes, sir. So this is how your Coulomb's law is used. Another example of Coulomb's law in chemistry, as you can see here, I have shown some arrows. So ionization energy is the energy required to either add or subtract electron from your material. किसी भी एटम को मोलिक्यूल में जब आप कन्वर्ट करते हो, सॉरी आयन में कन्वर्ट करते हो, so at that time either you add an electron so that it will become negative ion, or you subtract electron so that it will become positive ion. So as you move from left to right, your ionization energy increases. Why? As you move in periodic table, left to right move करेंगे तो ionization energy increase होगी. क्यों? Electrons increase हो रहे हैं. Yes, because number of charges. एटॉमिक नंबर बढ़ता है. Yes, when your atomic number increase, not only atomic number increase, but your number of electrons and number of protons, charges increases, so obviously your ionization energy will increase. On the other hand, now see यहाँ पे देखो lithium है, so it will be more difficult to ionize your oxygen as compared to lithium, because lithium have atomic number 3 and oxygen have 8. But हाइड्रोजन को आयनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा as compared to oxygen. If you see this, ionization energy decreases as you move from top to bottom. Even though atomic number of oxygen is more than hydrogen, still ionization energy of atomic will oxygen will be less than hydrogen. Why? Sir, outer The orbit. distance. Yes, distance. See on, yes, thank you. Distance. Here
hydrogen and helium, you have only one orbit. Now here you have Yes. second orbit. Here you have third orbit. So जैसे जैसे number of orbit बढ़ता जाएगा, your outer electron will have, sorry, your nucleus will have less hold on the outer electron. So obviously ionization energy will decrease. So whenever you are making any complex compound in chemistry, this particular thing, ionization energy, plays a very important role. And ionization energy, how ionization energy changes of particular material, a particular atom, is depicted by using Coulomb's law. So I guess दो एप्लीकेशन बहुत है Coulomb's law पढ़ने के लिए. अब कोई नहीं बोलेगा ना कि सर इसका रियल वर्ल्ड में कहीं पे एप्लीकेशन नहीं है. So here is the actual statement of Coulomb's law. So whenever two charges are placed in vicinity with each other, there is a force of either attraction or repulsion based on the nature of charge. Okay, this force of attraction or repulsion, जो कोई भी force होगा, this force will be along the line joining two charges. ये बहुत जरूरी है. This force will be along the line joining two charges, directly proportional to the product of charges q1 q2 and inversely proportional to the square of distance between two charges, inversely proportional to your r square. Constant of proportionality is 8.99 into 10 raised to 9 Newton meter square per coulomb square. Okay, ये यूनिट कहां से आया, कोई बता सकता है? How you get this unit? Dimension या इक्वेशन को रीअरेंज कर लो. F is equal to ke q1 q2 upon r square को रीअरेंज करेंगे, it will become ke is equal to f r square upon q1 q2. So F is Newton, r square is meter square, q1 q2 will be coulomb square. So Newton meter square per coulomb square. Yeah. So this is your actual Coulomb's law. तो statement ये लिख लो notebook में. And in our next session, we will directly solve numerical, where we will be calculating these forces of attraction and repulsion. Okay. So before going into our next session, I want you people to write down steps to solve numericals. So directly हम क्या कर सकेंगे, numerical solve करना start कर पाएंगे. Steps to solve numerical based on Coulomb's law. लिख रहे हो ना नोटबुक में? Yes. Yes, sir. First, calculate vector r bar. Calculate vector r bar from given coordinates of charges. क्योंकि f कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा क्या है, दिस इज योर स्केलर रिप्रेजेंटेशन. वेक्टर में यहाँ पे आएगा f बार और यहाँ पे आएगा a r कैप, ऐसे आएगा इक्वेशन. सो यू नीड टू कैलकुलेट a r कैप. सो पहले हम r बार कैलकुलेट करेंगे. स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट यूनिट वेक्टर in the direction of r bar. Calculate unit vector in the direction of r bar, that is ar cap. Now what is the terminology you use? आप इसको ar cap ही बोलते हो. सोनाली मैम क्या बोलती है इसको? सर यही है. ओके, ar cap. So ar cap ही बोलेंगे हम भी. Once you are fine with your r bar and ar cap, ये दोनों एक बार मिल जाए, then use Coulomb's law. Write Coulomb's law and put SI units. Put SI units.
And step number Sir, 5. can you please repeat step 3 one? Which step? Sir, step 3. Step 3. Step 3 is write down Coulomb's law. Okay, sir. Write down Coulomb's law and put values with SI units. Put values with SI units. Now, why it is important to put values with SI units? Because the charges that are given to you will either be in microcoulomb, millicoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, ऐसे बोला जाएगा. So we will convert them into coulomb. So if it is micro, it is 10 raised to minus 6 coulomb. If it is nano, 10 raised to minus 9 coulomb. If it is pico, 10 raised to minus 12 coulomb, and so on. Similarly, the distance might be given either in meters or centimeters or millimeters. तो उसको भी हमें स्टैंडर्ड जो मीटर्स है उसमें पुट करना है. See, why people find it very difficult to pass in electromagnetics? It is because of these silly mistakes जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि चार्जेस उन्होंने दिए हैं माइक्रोकुलम में, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया कि 5 माइक्रोकुलम का एक चार्ज है, अनदर इज 10 माइक्रोकुलम, सो दे आर डायरेक्टली राइटिंग 5 into 10 50. सर इजी तो था, बट भाई ये 5 into 10 50 ऐसे नहीं था. 5 माइक्रो है, सो 5 into 10 raised to minus 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 into 10 raised to minus 6 ऐसे करना था आपको. तो बच्चे ये गलती कर जाते हैं यहाँ पे, and then they find it very difficult to pass in electromagnetics. क्योंकि see, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसका एग्जैक्ट आंसर ही चाहिए होता है. अगर 10 raised to minus 6 की जगह पे आपने 10 raised to minus 7 कर दिया तो आंसर गलत होगा. समझ रहे हो? सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, and whatever numericals we are solving in class, solve it on your notebook. नोटबुक में खुद लिखो, अपना खुद का कैलकुलेटर परचेस करो. अगर अब तक किसी ने नहीं किया है, प्लीज परचेस योर ओन कैलकुलेटर. ये बहुत जरूरी है. एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में. हमारा कहाँ पे चल रहा है? Excuse me, sir. यस. सर इन द प्रीवियस क्लास आपने एक फोटो दिखाई थी और आपने पूछा था कि आपको ढूंढना है कि ये कौन